Hello 7th standard students, welcome to our channel Vidyarthi. Today we will discuss about the lesson data handling. Introduction. Mean, median and mode are the measures of central tendency. Mean, median and mode. These are the three measures of central tendency. You will be asked the question, write the three measures of central tendency. So you have to write mean, median and mode. Now what is the data? Data is a collection of numbers gathered to give some information. Example, percentage of marks secured by the children. So data is the collection of numbers gathered to give some information. Okay, it is not in a particular order and all. It is just the information, whatever you get, that is written down. The data collected and put without any specific arrangement is called raw data. So data, if it is not arranged in either ascending or descending order, it is written haphazardly, then it is called as a raw data. For example, the marks obtained by the students in maths. So the different marks obtained by the children, that is 10, 12, 11, 9, 2, 5, 19, 20, 7, 13. It is in there is no arrangement. So it is like the roll number wise, the marks are written. Okay. Here the marks are not arranged in any particular order. Then it is called as a raw data. Now to find out the maximum and the minimum marks, it is easy to find if we arrange the raw data either in ascending or descending order. So जो भी डाटा है उसमें से ढूंढते बैठने से अच्छा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, उससे अच्छा सबसे पहले रॉ डाटा को एक अरेंजमेंट में लिखो, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग में. फिर आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो विच इज द मिनिमम मार्क्स, विच इज द मैक्सिमम मार्क्स. और दूसरे क्वेश्चंस को भी आंसर करने के लिए वो इजी पड़ता है. नाउ कमिंग टू the next, what are the terms used here? First, it is the range. What is a range? It is the difference of the highest and the lowest observation. मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन है, डाटा है, उसको आप लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखोगे तो सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, then it is called as a range. The difference of the highest and the lowest observation is called the range. So how to find out range? Range is equal to highest observation minus the lowest observation. Okay, that is the one term. You get what is the range. Find the range of the given data. ऐसा पूछते हैं. Now arithmetic mean. अभी mean central tendency में first is the mean. Actually it is called as the arithmetic mean, but usually we tell it as mean. It is nothing but average. So you have learnt in the earlier classes. So average lesson was there. So average के जैसे ही इधर भी find out करने का है. Sum of all observations upon the number of observations. So this formula you have to remember. Mean is equal to sum of all observations upon the number of observations. Now coming to the examples. Example 1. The weight in kg. So weight is given in kg of 10 students of a class are 43.5, 49.5, 52, 43, 47, 44.5, 38.5, 40, 47 and 38. So what is the mean weight? So first we have to write the formula. Mean is equal to sum of observations upon number of
observations. Okay, now you have to write all the observations and you have to add. So 43.5 plus 49.5 plus 52 plus 43 plus 47 plus 44.5 plus 38.5 plus 40 plus 47 plus 38, the whole divided by how many are there? If you count and see, you will get 10, but in the question also it is given 10. Now count and see whether you have written all the 10. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Now when you add, you will get the answer 443.0. You add and see, you will get 443.0 upon 10. That means it will be 443 upon 10 divide by 10 means 1 decimal. So it will be 44.3, but now it is kg, isn't it? It's the weight is in kg. 44.3 kg is the answer. Is it clear? Now coming to the second subdivision, उसी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the range of the weights of the students? What is the range? So for that first we have to write in the ascending order. So write ascending order. Ascending order में लिखने के वक्त सबसे छोटा कौन सा आएगा, इसमें से चेक करो. It is 38. Next it is 38.5. Next 40. Then it is 43. Then it is 43.5. Next 44.5. Then it is 47. 47 two times it is there. Then 49.5 and then it is a 52. Now count and see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कभी कभी लिखने के वक्त कोई कोई नंबर्स मिस हो जाते हैं, तो आप लोग लिखने के बाद इधर आप लोग पेंसिल में टिक भी कर सकते हैं. चल क्वेश्चन पेपर में आप लोग वैसे टिक कर सकते हैं, सब लिखे हैं या नहीं देखने के लिए. ना असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं. अभी रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. सो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कितना मिला आपको? 52 minus lowest is 38. So the answer is 52 minus 38. 12 minus 8 is 4 and here 4 is remaining. 4 minus 3 is 1. 14 kg. Clear? Now coming to the third question. Find the number of students having weight more than the mean weight. Now which is the mean weight? मीन वेट ऑलरेडी आप लोग निकाले हैं, फाइंड आउट किए हैं. कितना है मीन वेट? इट इज 44.3 kg. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग वेट मोर देन द मीन वेट. तो असेंडिंग ऑर्डर में चेक करो 44.3. सो 44.3 मतलब इधर आया है ना 44.3. 44.5 से कम.
तो कितने बच्चों का वेट ज्यादा है? 1 2 3 4 5. सो आंसर 5 students have weight more than the mean weight. समझ में आया? तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये सब ऐसे वाले क्वेश्चंस को भी आप लोग आंसर कर सकते हो. सो दैट वाज क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1. नाउ कमिंग टू द वर्कशीट sums. Worksheet 1. The related sum, the same like the example. So worksheet 1, the attendance of a school in a school for a week is as follows. So कितने बच्चे attend किए हैं वो दिए हैं. So calculate the mean of the attendance. So first you will write the attendance. Attendance in the school is equal to 425, 430, 400, 408, 410, 423. Now they have asked mean is equal to add sum of observations upon number of observations. Now write, putting the addition mark in between, 425 plus 430 plus 400 plus 408 plus 410 plus 423 upon how many observations are there? 1 2 3 4 5 6. Now when you add you will get the answer. It is 2496 upon 6. 2496 upon 6. 6 how much are? 4s are 24, 6 1s are 6, 3 remains, 6 6 are 36. So answer mean of the attendance is 416. Okay. Hope you understood. This is only the simple sum. It is find out the average, that is the mean. Now coming to the second question, heights of 10 students, that is the boys, were measured in centimeters and the results were as follows. So आप लोगों को ये दिया है, find what is the height of the tallest boy. अभी टॉलेस्ट बॉय, शॉर्टेस्ट बॉय, वो सब के लिए सबसे पहले हमें क्या करने का है? असेंडिंग ऑर्डर, है ना? असेंडिंग ऑर्डर में लिखो. अभी असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के वक्त चेक करो 128. तो 128 लिखने के बाद इसको ऐसे टिक कर सकते हैं पेंसिल में. नाउ 132, नेक्स्ट इज 135, 139, 143, 146, 148, 149, 150, 151. 10 students. Check 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, now what is the height of the tallest boy? So answer, height of tallest boy is, सबसे लंबा वाला 151 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में दिया है तो यूनिट डालने का है.
व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट बॉय। देखो क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है उसको चेक करो क्या पूछे हैं और उसके हिसाब से स्टार्टिंग में असेंडिंग ऑर्डर लिखो, फिर ये सब आंसर्स को लिखते जाओ। द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट बॉय, सबसे छोटा वाला असेंडिंग ऑर्डर में सबसे कम है 128 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द रेंज। रेंज का फॉर्मूला आपको मालूम है, इट इज हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। अभी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कितना मिला है आपको, ऑलरेडी द हाईएस्ट 151, लोएस्ट 128. now 1 means 11 minus 8 is 3, and here it is a how much, 4 minus 2 is 2, 1 minus 1 is 0. Is it okay? Now coming to the fourth, find the mean height. Okay, mean height formula, sum of observations upon number of observations. Now you have to add all these. So 128 plus 132 plus इधर से सब लिखते जाओ, 135 plus 139 plus 143 plus 146 plus 148 plus 149 plus 150 plus 151 upon, there are 10 students. So the answer will be, ऐड करने के वक्त 1421 अपॉन 10 इधर आएगा, ऐड करने के वक्त 1421 अपॉन 10. So 1 decimal 142.1, it is in centimeter. Okay. How many boys are there whose heights are less than the mean weight, mean height, sorry. अभी 142.1, 142.1 कहाँ आएगा। सो असेंडिंग ऑर्डर के वो लिस्ट में देखो 142.1, तो इधर आएगा 143 से कम, तो इधर से आप लोग चेक करो कितने बच्चों को कम हाइट है, 1 2 3 4. So answer, 4 boys have heights less than the mean height. mean height कितना है, 142.1 सेंटीमीटर. समझ में आया कैसे ढूंढने का है। असेंडिंग ऑर्डर के लिस्ट में मीन हाइट वाला कहाँ आएगा, देखो उससे ज़्यादा कितना है, कम कितना है। पहले के इसमें ज़्यादा कितना है पूछे हैं, अभी कम कितना है। सो होप यू अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन and the example 1 and worksheet 1, 2 questions. That is about how to find out the mean, arithmetic mean. Okay then, bye. Thank you for watching.